platform focus only, because profit, platform, and process take time, resource, and people to build it. What you have originally is you yourself as the founder and a group of people who believe in the problem that needs to be solved. बिकॉज अगर वो नहीं है तो बाकी सारी चीजें पानी कम चाय हैं. मतलब दुनिया में आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, बहुत सारे लोग बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, कस्टमर फीडबैकिंग कैसे करिए, रेवेन्यू कैसे बनाइए, पार्टनरशिप्स कैसे एस्टैब्लिश कीजिए, वैल्यू प्रोपोजिशंस को कैसे डिफाइन कीजिए, अपना मॉडल कैनवस को कैसे डिजाइन कीजिए. ये सारी बातें आपको बहुत सारा ज्ञान लोग देंगे और दिया होगा शायद पिछले 2 दिन में. एक चीज जिसका फोकस के ऊपर हम लोग कभी कभी मिस कर जाते हैं वो है द कॉन्सेप्ट of people. How do we define a problem? How do we break it up into smaller portions? How do me as a startup focus on just one unit of that particular problem and keep solving it? Keep solving it iteratively जब तक हमको ये ना मिल जाए कि इसका प्रोडक्ट जो 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 सॉल्व करता है और जो मार्केट इसको रिक्वायर करता था उसका फिट कहाँ पे है. Where is the product market fit? किस जगह पे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, कहाँ पे हम अपने पीपल को इतना मजबूर कर दे रहे हैं, वो पीपल जो हमारा कस्टमर है, कि वो अपने पॉकेट्स में जाए और हमारे को एक प्रॉफिटेबल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सर्विस, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अगेंस्ट दे. सो एक आइडिया तो ये कि एंटरप्रेन्योरशिप स्लैश स्टार्टअप्स स्लैश ऑल ऑफ दिस सो कॉल्ड डिसरप्शन एंड सारी चीजें जिसको आजकल बहुत ग्लैमराइज किया गया है, बहुत तरह के लोग बहुत तरह से बात करते हैं इसके बारे में. Understand and make it a point that it is nothing but people and people-based focus. The longer that you maintain that, the longer you will solve problems, the longer you will be viable in the market, the longer you will be viral and continual with regards to your value proposition. एक और चीज जो आप लोगों से पूछनी है and in the process that you are following, जितने लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं नया नया, is कि एक क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ आपके लिए, आपको जो आंसर आए जवाब में वो आप अपने चैट विंडो को यूज करके just put in the value there and we'll record it. For example, the next question जो था, और उसके बाद मैं हिंदी फिल्म्स पे चला जाऊंगा. तो जो लोग हिंदी फिल्मों में इंटरेस्टेड हैं, like this session was supposed to be entrepreneurship, right? ये हिंदी फिल्म क्यों बोल रहे हैं? So मैं थोड़ी देर में आपको हिंदी एंड इंग्लिश फिल्मों की दुनिया में 1 मिनट के लिए लेके जाऊंगा, so that you can realize कि investments, incubation, ecosystem building, entrepreneurship is all very connected. It's all very from the life. इसके सारे inferences या इसके सारे inspirations जो हैं ये आपके आसपास exist करते हैं. एक question जो है उससे पहले वो ये कि if given a chance to all of you, to Moinak, to Sweetie, to Samrat, to Sudeep, to Supriya, to Priyanka, to the others who are there on the call, Moriama, I'm just putting in a question, Anandita, Supriya. The question is, if given a chance, what would you like to build? A product or a brand? What is the choice? What would you like to think? This is what I would love to build. It should ideally be a product that I build, or it should be a brand that I build. What would it be that you would like to build if given a chance? All the resources, सारे resources हैं आपके पास, सारे chances हैं आपके पास 2 choices भी हैं. आप एक product बना सकते हो या आप एक brand बना सकते हो. What would you actually build? Can I have a few answers? If some of you can quickly write it down chat window में कि अगर product and brand के बीच में option मिले तो हम क्या बनाएंगे? Moinak, Samrat, Sudeep, Supriyo, everybody else. If given a chance between product and brands, what would you build? Aditya wants to build a product. Sudeep wants to build a product. Okay. Any more answers? If given a chance between product and brands, what would you like to build? Think. Hello? Can I ask a few? Quality product which becomes a brand. Okay, Maina, that's an interestingly thought out answer. Anybody else? Just a couple of more answers at least. If given an opportunity to build either a product or a brand, what would you like to build? Anybody? The girls maybe? Given a chance, what would you like to build?
Pratiksha wants to build products. Okay. Okay. So I'm seeing a majority of you talking of wanting to build a product. Rohit also wants to build a product. Okay, Rohit, thank you for your answer. Okay, Sagar wants to build a brand. Thank you, Sagar, for a different answer. Okay, I'll just give you a line. मैं आपको एक line दे रहा हूँ. The ones who want to make a note of it, please try making a note of it. The others who want to keep it consistent, your choice. Product is a function of time. Product is a function of time. Brand is a function of emotions. Product is a function of time. Brand is a function of emotions. The only thing that has always changed since man has existed is time, and the only thing that has remained consistent is emotions. What do you want to build now? Product is a function of time. Brand is a function of emotions. Do you want to build something which hits emotions, or do you want to build something which hits the element of time? भारी हो गया दादा? सागर ब्रांडी बनाओगे अभी भी या प्रोडक्ट बनाना है? अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं है. वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ पीपल. रोहित, प्रतीक्षा, Mainak, Sudeep, Aditya, what would you like to build? A brand or a product? After you have heard this line, a product is a function of time. वक्त के साथ प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट्स का नेचर, प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिकेशंस, प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेबिलिटी, प्रोडक्ट्स के प्राइस पॉइंट सब चेंज होते हैं. ब्रांड इज अ फंक्शन ऑफ इमोशन. गुस्सा गुस्सा ही था, ख्याल ख्याल ही था, केयर वाज ऑलवेज केयर, लव वाज ऑलवेज लव, empathy was always empathy, fear was always fear. It does not change with time, and a brand reciprocates with that. एक एग्जांपल देता हूँ आपको. एक बहुत फेमस सा ब्रांड है वर्ल्ड में, हैज अ लॉट ऑफ रियल एस्टेट, हैज अ लॉट ऑफ गुड डिवाइसेस, is a very aspirational device. A lot of people want that device as an ownership. बहुत लोगों को लगता है कि ये हम खरीदें, ऐसा मेरे पास कुछ एक होना चाहिए, इसका मेरे पास कुछ एक होना चाहिए. एंड बहुत लोग इसलिए खरीदते हैं because they don't even need to check the specifications and the new product features. They buy it because उस का नाम X है. एंड वो ब्रांड बनाने वाले ने 1983 में ये बात बोल दी थी कि हम कभी भी कोई भी प्रोडक्ट जब भी बनाएंगे, our brand will stand for seamlessness and simplicity of our user experience. Our brand will stand for seamlessness and simplicity. उन्होंने ये नहीं बोला था कि मैं मोबाइल ब्रांड बनाऊंगा, मैं वेब ब्रांड बनाऊंगा, मैं इंटरनेट का ब्रांड बनाऊंगा, मैं टेक्नोलॉजी का ब्रांड बनाऊंगा, मैं डिस्ट्रीब्यूशन का ब्रांड बनाऊंगा. ये सब नहीं बोला उन्होंने. फीचर्स नहीं बोले, स्पेक्स नहीं बोले, डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर नहीं बोला. उन्होंने बोला कि बॉस मैं वो बनाऊंगा इसमें यूजर एक्सपीरियंस मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड सीमलेसनेस सबसे ज्यादा जरूरी होंगी. उनकी सबसे पहली और व्यापक रिक्वायरमेंट जो थी, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो थी, वो थी कि आई वांट टू बिल्ड समथिंग व्हिच ऑलवेज रिमेन्स सीमलेस एंड रिमेन्स वेरी यूजर सेंट्रिक. Once upon a time, they launched something on a very small device which used to hold music. Then they launched something which used to hold your multimedia files and ability to connect to the web and host apps. Then they launched something on a system. Then they launched something else. Products वो बहुत सारे launch करते चले गए, लेकिन उनका brand consistent रहा. Can you name this particular brand that I'm talking about? किसी को कोई guess कर सकते हैं? Did I even mention one product? गौतम, मैंने किसी एक भी प्रोडक्ट के उनके बारे में बात की थी? मैंने बोला आईफोन, मैंने बोला आईपॉड, मैंने अलग से बोला था, एक्सप्लिसिटली बोला था iMac. Did I say Mac OS? Did I say Safari? I did not. What did I say? User seamlessness and simplicity in the utilization of the features that they build. The idea with great startup is,
and I still consider Apple as one of the best examples of startups that have ever existed, because they chose a people problem and they continue to solve it with changing time. The only thing that kept changing for them was the product nature in which the problem was being solved. Their brand equity did not change. Everybody had the same recall when they would see an Apple brand. Everybody would have the same sense of ownership when they will own an Apple brand. How many such Indian brands can you actually think of who have established a similar brand recall, जिनके बारे में सुनते ही समझ में आता है अगर इनके यहाँ से आया है तो ये बात होगी, कोई भी बात हो सकती है, अच्छी बुरी खराब, एक्सेप्टेबल, शेडी, नॉन एथिकल, सब हो सकता है. बट इज देयर आर देयर ब्रांड्स व्हिच कम इन योर हेड जब मैं आपकी तरफ ये फेंकता हूँ या आप स्टार्टअप्स? बिल्कुल सागर, still go for a brand. And अगर if you want to stay with me, I will always go ahead and build a brand, and only because brands are independent of the time and the requirement of that particular age, that particular time. हर टाइम में जब हम लोग 2022 में हैं, so crypto currency is a thing, financial technology is a thing, Web3 is a thing, cloud computing is a thing. इन सारे एरियाज में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इन सारे एरियाज में प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, सर्विसेज बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं. बट आज भी बिजनेस को एक्सेलेंट बनाने का या बिजनेस को कमाल बनाने का तरीका जो है वो आज भी लिमिटेड है इस बात पे कि डू यू हैव द एबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग पीपल एक्सेप्टेबिलिटीज, पीपल अफोर्डेबिलिटीज, पीपल एक्सेसिबिलिटीज. एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, अगर ये तीन एज के ऊपर आप काम कर रहे हो, एंड वो भी पीपल सेंट्रिक एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी पे अगर काम कर रहे हो, देन यू हैव क्रिएटेड अ ब्रांड. ऑफन जब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग से कि ब्रांड का मौका मिला है और प्रोडक्ट बनाने का मौका मिला, आप क्या बनाओगे, तो बहुत लोग ब्रांड का मतलब समझ लेते हैं जिसको मार्केटिंग जिसकी की जा रही होती है या जिसके बैनर्स लग रहे होते हैं. तो सर स्टार्टअप इतना जल्दी कैसे ब्रांड बन जाएगा कि इट कैसे नहीं होते उनके पास. वो तो इन्वेस्टर्स के पास भागते रहते हैं, वो तो इंक्यूबेटर्स के पास जाते हैं, एक्सेलरेटर्स के पास जाते हैं टू अंडरस्टैंड कि भाई हमें करना कैसे चाहिए, हमें बिजनेस बनाना कैसे चाहिए. तो आप कैसे बोल रहे हो कि वो ब्रांड बना लेंगे? जब मैं ब्रांड का कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, मेरा बहुत स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन ये है कि ब्रांड इज समथिंग दैट इज पेरेनियल, जो वक्त के साथ इवॉल्व करेगा, इम्पैक्ट करेगा मल्टीपल इमोशंस को. प्रोडक्ट इज समथिंग दैट इज डिपेंडेंट ऑन द टेस्ट, फीचर, एक्सपेक्टेशंस एंड द टाइम्स दैट यू लिव इन. उस वक्त में एक प्रोडक्ट बहुत मीनिंगफुल होगा, उस वक्त से पहले या उस वक्त के बाद वो शायद इम्पॉसिबल या डेप्रिकेटेड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, phones in 2007 was considered a great innovation. 2022 it's a normal innovation. 2011 में e-commerce was still new. People buying on platforms was still new. 2022 में now everybody wants कि मेरे personalized buying experiences होने चाहिए. मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो चीज़ों पे बात कर रहा हूँ, मैं जो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उन चीज़ों का सजेशन मेरे को ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए. मेरे को पर्सनल बिहेवियरल कॉमर्स मिलना चाहिए rather than just एग्रीगेशन कॉमर्स की बहुत ऑप्शंस मिल गए और मैं कुछ खरीद रहा हूँ उसमें से, बिकॉज मेरे को स्क्रॉल करना पसंद नहीं है, मेरे को कुछ और करना है. सो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपके फीचर के एक्सपेक्टेशंस, आपके प्लेटफॉर्म के स्पेसिफिकेशंस के एक्सपेक्टेशंस बदलते रहते हैं. जो एक चीज़ नहीं बदलती है वो ये है कि हमको प्लेटफॉर्म बड़ा सिंपल सा चाहिए. हमें डुअल कलर का प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें ज़्यादा डार्क कलर प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, हमें ये बहुत सारे वैसे रीजंस हैं, रैशनल्स हैं जो आप लोगों को मेजरली जब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात की जाती है या स्टार्टअप के बारे में बात की जाती है, तो इस फोकस पे इंटरवेंशन नहीं किया जाता है कि इट रिक्वायर्स यू टू थिंक ऑफ योर इनोवेशन एज अ ब्रांड एंड डोंट थिंक ऑफ योर इनोवेशन एज अ प्रोडक्ट, सर्विस और अ प्लेटफॉर्म. Those will keep evolving, those will keep changing, those will keep becoming better or worse depending on what situation you are in with your particular brand. So for me, what is important for you to understand is जब आपके तरफ कोई एक वर्ड फेंके कि what is entrepreneurship or what is startup, and दूसरा वर्ड ये फेंके कि आपके पास चॉइस है ब्रांड या प्रोडक्ट बनाने का, तो आप ये दो आंसर्स बहुत ही सॉलिड कन्विक्शन के साथ दे पाएं कि मेरे लिए एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब पीपल होता है, पीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, पीपल इश्यूज होते हैं,
The I to identify continuous of problems होता है, to connect it with a brand message. Because if we are not being able to find that unit reason for which we want to build, for which people will come back to your platform, people will come back to your process, people will come back to your product, अगर वो चीज हमने आइडेंटिफाई नहीं की, then we are never going to identify the sweet spot of how our business will keep growing from strength to strength, how it will keep generating the money that somebody was talking about when I asked, what do you want from a particular startup or an entrepreneurial journey? It will generate you that particular idea which will keep you excited, would want you to almost jump out of your bed every morning to work, because it is something that you want to achieve, an idea or an innovation or a reference. And a lot of people confuse करते हैं अपने आप को इस बात से कि product या platform बनाना is all about technology innovation, is all about knowing a lot of new technology and knowing a lot of zany new innovations, और अगर हम वो नहीं जानेंगे तो हम शायद एक अच्छी चीज नहीं बना पाएंगे. एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी स्टार्टअप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 kinds of innovations, and it could be any of them at any point of time. One of them is technology. सिर्फ एक है उसमें से टेक्नोलॉजी. इट्स नॉट नेसेसरी दैट अगर टेक्नोलॉजी इनोवेट लगातार नहीं हो रही है तो आपका बिजनेस इनोवेट नहीं हो सकता है. तो इस थॉट को अपने दिमाग में फ्लैश आउट कर दीजिए कि टेक नोइंग पीपल क्रिएट द बेस्ट स्टार्टअप्स. ऐसी कोई बात जरूरी नहीं है. सेकंड, एसेट्स. आप किस तरह उस वक्त के, उस टाइम के, उस कंटेम्पररी वर्ल्ड के सही एसेट्स को जनरेट करना और ओन करने की कैपेसिटी रखते हैं. एंड जब मैं एसेट्स बोल रहा हूँ आज की डेट में, वो डिजिटल एसेट्स भी हो सकते हैं, ग्राफिकल एसेट्स भी हो सकते हैं, कॉन्वर्सेशनल एसेट्स भी हो सकते हैं, बॉट ड्रिवन एसेट्स भी हो सकते हैं. सो मेनी वेरिएंट्स ऑफ एसेट्स. तो आप वो कैसे एसेट्स क्रिएट कर रहे हो जो आपके कस्टमर को आपके प्रॉफिटेबिलिटी से आपके डिस्ट्रीब्यूशन तक कनेक्ट कर रहे हैं. क्योंकि अगर आपने एसेट्स में इनोवेट कर दिया तो आप टेक्नोलॉजी में अगर इनोवेट नहीं भी कर रहे हो तब बिजनेस इवॉल्व कर रहा है, आपका बिजनेस इनोवेट कर रहा है, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है. और एक थर्ड कैटेगरी ऑफ इंप्रूवमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं चैनल्स. कि चैनल्स इनोवेट कर लीजिए, नए चैनल्स. कि जब फ्लिपकार्ट ने किताबें बेचनी शुरू की थी 2008 में, तो लोग दुनिया में किताबें बेचते थे. जब उन्होंने बेचना शुरू किया बहुत सारा और सामान, तो बहुत सारे लोग और बहुत सारा सामान बेच रहे थे ऑनलाइन, लेकिन दे वर नॉट एज सक्सेसफुल एज फ्लिपकार्ट और दे वर नॉट एज सक्सेसफुल एज अमेजॉन. तो क्यों वो उतने सक्सेसफुल नहीं थे? क्या ऐसा कर लिया फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ने जो बाकी ऑनलाइन रीसेलर्स एंड एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म ने नहीं किया? उन्होंने चैनल्स इनोवेट किए, उन्होंने डायरेक्ट टू होम मार्केट्स निकाले, उन्होंने पे ऑन डिलीवरी निकाला, उन्होंने क्रेडिट रिटर्न्स निकाले, उन्होंने रिफंड्स निकाले, लॉयल्टी निकाला. ये सारी चीजें जो उन्होंने निकाली, उन्होंने चैनल्स इनोवेट की. कोई टेक इनोवेट नहीं हुआ. वही प्रोडक्ट लिस्ट होता था, वही फोटो खींची जाती थी, उसी तरह से प्रोडक्ट्स लिस्ट हो रहे थे अलग अलग कैटेगरीज में, वही फिल्टर्स यूज हो रहे थे. यूजर जाके लॉग इन करके एक प्लेटफॉर्म पे अपने हिसाब से सर्च करके एक प्रोडक्ट सर्च करता था एंड व्यू करता था एंड उसको रिकमेंडेशन आते थे. तो कोई नई बात नहीं हो रही थी टेक्नोलॉजी के लिए, या एसेट्स कोई नई नए थे, क्योंकि वो भी ग्राफिक यूज कर रहा था, वो भी एक पेमेंट गेटवे यूज कर रहा था, वो भी क्या बोलते हैं कंपैरिजन एंड रिव्यूज यूज कर रहा था. तो एसेट्स वही पुराने थे, टेक्नोलॉजी वही पुरानी थी, बट चैनल्स नए थे. सो एज एन एंटरप्रेन्योर 3 चीजों का इस इंटरेक्शन से, एटलीस्ट 3 के कवेज को आप किकबैक्स को जरूर वापस लेके जाना. पहला, इफ एनीबडी थ्रोज द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स और इनोवेशन एट यू, I understand people. मुझे people दिखते हैं, मुझे लोग दिखते हैं जब कोई एंटरप्रेन्योरशिप बोलता है. बिकॉज लोग दिखते ही मुझे समझ में आता है लोगों की कुछ तकलीफ है. उस तकलीफ को मैं मॉड्यूल्स में तोड़ता हूँ, फिर समझता हूँ इनमें से कौन सा मॉड्यूल मैं खुद सॉल्व कर सकता हूँ और बाकी के लिए मुझे टीम बनानी है. उन मॉड्यूल्स को सॉल्व करके उन्हीं लोगों के पास लेके जाता हूँ, और वो लोग अगर इतना मेरे को कह देते हैं कि यार अगर ये आप बार बार दे पाओ मेरे को तो मैं आपको पैसे भी दूंगा इस बात के. इसी को एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी कहते हैं कि द लॉन्गर यू हैव पीपल फोकस, the more razor sharp your focus on people is, the better you become with your entrepreneurship skills. Similarly, entrepreneurship is about building a brand identity. That brand identity is not necessarily just marketing identity, not necessarily just asset identity, not necessarily just technology identity, not necessarily just channel identity, but it is an identity of understanding what is the recall that you want to create for your unit user. वो यूनिट यूजर जो आप सागर को, गौतम को, पूजा को, सोमनाथ को, रोहित को,
They will always want to get back to these people, Samrat ko, Moinak ko. They will always want to get back to a Samrat and a Moinak or a Sagar and tell them, मैं आपका सामान इस एक वजह से खरीदता था, और वो वजह आपने अगर रखी तो कभी कभी आपके प्रोडक्ट स्पेक्स अगर 19-20 भी हो रहे हैं, कभी कभी स्पेक्स उतने अच्छे नहीं हो रहे जितना पहला पिछला था या पिछला सब्सक्रिप्शन का एक्सपीरियंस था या पिछला प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस था, दे विल स्टिल स्टे बैक विद यू, दे विल स्टिल build with you, they will still want to pay you. And that is the ideal journey of creating audience affiliation or audience allegiance, that audience is not leaving you on a future cycle, that audience is staying back with you, that audience is wanting to give you answers, that audience is wanting to say yes to you irrespective of you changing products. एंड एक चीज जो आपको अपने टेक्नोलॉजी हैवी फ्रेंड्स को या टेक्नोलॉजी हैवी आइडेंटिटी को जवाब देना है कि कोई भी बोले कि सबसे कामयाब स्टार्टअप्स आके या एनी एडवाइजर या एनी इंक्यूबेटर या एक्सेलरेटर या इन्वेस्टर बोले कि सबसे कामयाब स्टार्टअप तो आके वो होते हैं ना जिनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है, ये कोई सत्य नहीं है. It's proven that out of 100 great startups, there are about 27 or 30 which have great groundbreaking tech. इसका मतलब बाकियों के पास तो कुछ और है ना. 29 ग्रेट स्टार्टअप्स में टेक था, बाकी 70 ग्रेट स्टार्टअप्स में अच्छे एसेट्स हैं, एसेट जनरेट करने की कैपेसिटी है, एसेट्स बना के यूजर से कनेक्ट करने की कैपेसिटी है, प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेसिटी है, एंड उससे भी ज्यादा उनके पास नए नए चैनल्स आइडेंटिफाई करने, प्रोसेस में इनोवेशन करने का कैपेसिटी है, रादर देन टेक और टेक के टूल्स पे इनोवेट करने की कैपेसिटी. तो ये कंपैरिजन अपने दिमाग में रखना. पीपल, ब्रांड, एसेट, चैनल एंड टेक्नोलॉजी. पीपल, ब्रांड, एसेट, चैनल, टेक्नोलॉजी. बिकॉज अगर 5 चीजें दिमाग में हैं तो उसके बाद का मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, कितने लोगों को और इंग्लिश मूवीज अच्छे लगते हैं? यस, जल्दी जल्दी लिख दो, जल्दी जल्दी प्लीज. थैंक यू. और लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ जब तक मैं आपके लिए एक स्क्रीन चालू करता हूँ. सुदीप, थैंक यू. सवाल ये है, जो भी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लोगों को हिंदी एंड इंग्लिश मूवीज अच्छी लगती है? बिकॉज मैं आपको जो ज्ञान देना था मैंने ज्ञान दे दिया आपको. पीपल, ब्रांड, टेक्नोलॉजी, एसेट्स, चैनल्स, ये 5 वर्ड जिस दिन आपने कंबाइन कर लिया, यू आर सॉर्टेड. पीपल, ब्रांड, technology, assets, channels, and you don't need to innovate on each one of them. You don't need to be special and groundbreaking on each one of them. You need to be special on one. Your people focus has to be there. You need to think of building a brand always. It needs to be about channels / process. It needs to be about assets which are contemporary. It needs to be about technology which you understand. वो टेक्नोलॉजी जो आप खुद नहीं जानते हो ना, वो कभी आप एक एक्सटेंडेड टीम से अच्छे से ऑडिट करके नहीं बनवा पाओगे. So always remember that it is about you being very very sure कि कल को आपने एक पर्टिकुलर लॉन्च करना है, कल को आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है, कल को आपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करना है. So it will always be a combination of one of these innovations and the rest of the 4 words falling into place. अब मैंने आप लोगों से पूछा कि हिंदी या इंग्लिश फिल्में पसंद है कि नहीं. 4 लोगों का 5 लोगों का यस आया, तो मैं 5 ही लोगों के लिए सेशन करवा देता हूँ. बाकी को बोल देता हूँ कि ठीक है यार, मेरे को जो ज्ञान देना था ज्ञान दे दिया. आईआईसी का बड़ा बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बुलाया एंड दे वांटेड टू हियर फ्रॉम मी. एक चीज और मेरे को एज एन ऑफर करनी थी आप लोगों की, बिकॉज आई नाउडेज इन्वेस्ट इन अ लॉट ऑफ कंपनीज एंड आई डू अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट्स अप टू $900,000 व्हिच इज रफली अराउंड 6.5 crores to 7 crore rupees. मेरे को ये बोलना था कि इफ देयर आर एनी ऑफ योर स्टैंडिंग इनोवेशंस और टीम आइडियाज और स्टार्टअप आइडियाज जो अभी तक आपने पोजीशन नहीं किए हैं या जिसमें आप फिगर आउट करने में मुश्किल पा रहे हो कि आई एम नॉट फाइंडिंग द राइट काइंड ऑफ मेंटोरशिप और आई एम नॉट फाइंडिंग द राइट काइंड ऑफ टीम टू बिल्ड इट विद, feel free to have your ideas bounced off to me. Feel free to consider me as your friend, philosopher and guide. And if not for anything else, feel free to consider me as that one investor who is ready to put in 30 lakh rupees of value in your idea as and when it is vetted against asset, technology और channels. आपने तीनों में से एक चीज एक ब्रांड फोकस के साथ और पीपल प्रॉब्लम के लिए बनाई होगी. I will offer you a 20 to 25 lakh rupee grant from our end, which we have started for college ideas or college entrepreneurial startups.
which are coming straight from campuses where teachers are combining with students, professors are working with younger second year, third year, final year students in designing and developing solutions to existing problems across areas of sustainability, health, food, education, finance, deep tech and space. अगर इन areas में आपके कोई भी आइडियाज हैं या कोई भी पीओसी है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप है, feel free to share that. Have a lot of support from our end because that is what I do with startups on a day in and day out basis. I work with somewhere around 250 startups, the government of India, and all of that other stuff. And galti se ya sahi se, I've gone ahead and invested in about 67 companies in the country, either directly or via direct facilitations. So that is an offer for each one of you who might have an idea, who might have a certain reference of how can we build this universe together. I would be there to support you in your venture building experience or your venture development experience. Just give me one moment. I'll make a screen open to everybody who said yes to me for liking English and Hindi films. अगर आपको English और हिंदी फिल्में पसंद हैं, so I want to run you through something very interesting, which talks about building a startup, but via the lens of films, via the lens of movies. So just give me one moment. Sorry, Tushar, sorry. Is my screen visible, Tushar? Thank you, Manak. तो यार बहुत लोग ना आप लोगों को जब ये शुरू करेंगे स्टार्टअप सिखाना और एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना and बोलेंगे this is the new future of engagement with the industry, future of employment is to actually become an employer and all of that. बहुत लोग बोलेंगे बिजनेस मॉडल कैनवस बनाना पड़ेगा और बहुत लोग बोलेंगे कि एक तैयार करिए, आप अपना प्लान तैयार कीजिए कि हाउ डू यू वांट टू टॉक अबाउट योर ओवरऑल प्लान. तो मैंने सोचा यार ये प्लान ना समझाना बड़ा मुश्किल होता है. तो मुझे ये मालूम था कि Sudeep, all of these people, Sagar, Gautam, all of them watch movies, and some of the movies or series or TV series they watch with a lot of connect. उनको लगता है कि हाँ यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा तरीका कि अगर हम बिजनेस मॉडल बनाना सीख जाएं मूवीज के नजरिए से या उसका कॉन्सेप्ट समझ जाएं, उसकी स्टेजिंग समझ जाएं वाया मूवीज, देन इट माइट बी वेरी कनेक्टेड. तो मैंने बोला चलो ठीक है, एक कोशिश मार के देखते हैं कि does this even work for them in that particular format. So what I've done is I've broken it up into about 6 slides for you. 6 stages of building a business, 6 stages of talking about it in different ways. Besides जो ये 5 चीजें आपको शुरू में बोली, people, brand, technology, assets, channels. अगर ये 5 चीजों में से कोई भी एक चीज रेडी है आपकी किसी भी एक आइडिया के बारे में जो people centric आइडिया है, then I am ready to support you. ये मैंने पहले ही बोल दिया. But उसके beyond जो जनरल लोग हैं कॉल पे जिनको जानना है कि यार ये बिजनेस मॉडल कैनवस किस चिड़िया का नाम है, तो वो इस चिड़िया का नाम है कि भाई ये फिल्म का नाम कोई जानता है, जल्दी से बता दो अगर कोई इस फिल्म को इस स्टिल के नाम को जानता हो. इंसेप्शन. ब्रिलियंट. हु इज दिस? आदित्य. हाउ मेनी टाइम्स? यस सर. एक बार देखिए, 5 बार देखिए सर. ओनली वंस. समझने में कितना? ओनली वंस. ओके, उतना ही काफी था. उतने में बोर हो गए थे 3 बार. खैर, सो दी आइडिया with this was, and जिन लोगों ने नहीं देखी है, a quick suggestion, थोड़ी सी स्लो है, थोड़ी सी बोरिंग है,
क्रिस्टोफर नोलन फिल्में थोड़ी इंगेजिंग बनाते हैं, लेकिन उसको देखने के लिए थोड़ा सा पेशेंस लगता है. Try watching this movie. Don't watch it with Hindi voiceovers. Watch it in English with subtitles, uh, and try watching it with the perspective of the fact कि how is a concept as irrational as dreams in a dream being validated via actual simulation, via actual explanation, and via actual client interviewing. सो वो जिनको ये आइडिया पुश कर रहे हैं या जो इसके रिस्क्स बता रहे हैं, इस फिल्म में एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका यूज किया गया है टू प्रपोज अ पर्टिकुलर मेथड वाया गेनिंग कॉन्फिडेंस ऑफ एन ऑडियंस व्हिच माइट और माइट नॉट नो यू इन एडवांस. वो आपको शायद जानती है या नहीं जानती है, लेकिन कॉन्सेप्ट को वैलिडेट करने के लिए आपने बार बार पूरे कॉन्टेक्स्ट को उनके सामने रखा है एंड रिपीट किया है उसकी फुलफिलमेंट को, उसके पूरे complete होने को, and the fact that it is not just an idea but something that deserves validation and something that already has some weight in science and some weight in availability. It is not wishful thinking. इसको मैं नहीं कहूँगा दिन में सपने देखना, लेकिन इसको किस तरह एक्सप्लेन किया है is how entrepreneurs explain their concept that they bounce it off to the first level validation that they need. Because अगर concept ही validated नहीं होगा, अगर उनके पास confidence नहीं होगा इस बात का कि who do I want to sell and what do I want to sell, then sometimes what we miss out on is the inherent confidence in telling to the world कि ये concept क्यों valid हो सकता है. और इसी पे सबसे पहले मेहनत होती है. इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ऑफ किन लोगों के लिए आप सॉल्व कर रहे हो, क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्या रिकॉल रखने हो, इसी को हम लोग कॉन्सेप्ट वैलिडेशन कहते हैं. इस मूवी ने बहुत स्मार्ट तरीके से कॉन्सेप्ट वैलिडेशन को एक्सप्लेन किया है. जिन लोगों ने ये देखी है, आप अगर सीन्स रिले कर पा रहे हो अपने दिमाग में तो आप समझ जाओगे मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ. जिन लोगों ने नहीं देखी है, प्लीज गो अहेड, गिव इट अ ट्राई. इट्स नॉट अ मूवी फॉर एवरीबॉडी, बट द वंस हु वॉच इट दे लव इट. तो एक बार कोशिश करना फिर से. ये मूवी को जानता है जल्दी से? Can somebody give me a name of this movie? Very famous. I don't know. Iron Man. Iron Man 2, 1, 3, 4. Iron Man 2. Iron Man 2. Okay. What was he doing in this particular movie, Aditya? Iron Man 2. Yeah, Sudeep. So what was he doing? Was he trying out multiple suits? Was he trying out multiple? No, he was trying to make a new source of energy. Yes. So and was there a problem defined for it? Yeah, he first had to understand the remodeling of architecture. Yeah. So the whole idea was that in the first iteration, when he validated the concept of Iron Man in Iron Man 1, he just somehow went about his business and established a certain amount of process to his madness by creating the first suit. But now that he knew that this suit had possibilities, this suit had expectations, this suit could become much more, he started checking the various variations of it, the various prototypes of it, which would give him a sense of the best possible iteration, which will make him solve problems, which will make him address issues, which will make him actually be profitable with his overall intent. Because it was not about just winning one context, it was about winning multiple reasons to exist as Iron Man. And there were going to be bigger villains, there were going to be bigger context that was going to be set. And as is the norm with businesses, if you're not ready on the bench, you'll never be ready on the ground. आप अगर अपने लैब में तैयार नहीं हो तो आप अपने ग्राउंड पे भी कभी तैयार नहीं होगे. और लैब बोलने से मेरा ये मतलब नहीं है कि हर स्टार्टअप एक साइंटिफिक स्टार्टअप होना चाहिए या हर स्टार्टअप एक इंजीनियरिंग स्टार्टअप होना चाहिए. बट every startup will have its own kind of lab. The lab would be a lab of people. The lab could be a lab of instruments, a lab of resources, digital resources, a lab of computing, and so on and so forth. But you will have to simulate various versions of the solutions in the form of prototype that you build. If you don't do that, you are liable to fail much faster, and you will be found wanting in very early use cases. And that is the idea of prototype building, that prototypes give you the
of the product, the platform, the service that you eventually want to build. There's also one more important stage which you might all correlate with. Now, don't Scam 1992. get me wrong. Somnath knew it, Gautam knew it, Moinak knew it, Aditya for sure would know it because Aditya knows every movie in this particular room. But before I get into the details of who was right, who was wrong, pehla disclaimer, I am not complying to the idea of Scam 1992. I do not subscribe to the idea of Harshad Mehta, but what this TV series shows is the ability of converting a particular hint of multiplying in a particular market and using it as a particular growth strategy. Now, what was the hint that was shown in the show? That there are always market insiders who know a lot about markets, which could be used as insider training and utilized against market flow management, floor management, and Sensex management, which will give undue or due advantage to your own portfolio companies, which in today's day and age is called stock broking. So the idea was he identified or the group identified a very small iterative example and used it to build a very profitable multiplying reference of something that is achieved over a period of time. So that is the idea behind converting an established prototype and taking it to the layer of running it as a successful, scalable business model. That's what I'm wanting to mean by Scam 1992. Don't take other lessons from this particular scene because or this particular clip because it could be construed in many other ways. Has somebody seen this? Tamasha. Okay. So if not for anything, Techno India Agartala is extremely, and the other students, whoever and wherever they're coming from, they're extremely well tuned with a lot of Hindi movies and Hindi web series. Brilliant. This is Tamasha. Somnath, thank you for your quick write up. What are these two scenes? These are two scenes which kind of reflect the journey of the user. The user in this case was young Ranbir Kapoor and the older Ranbir Kapoor, wherein he is generating a thought process about life, about parallel existence, about growth, about sustenance from somebody who gives him a sense of the external variables, who gives him analogy stories, who gives him mythology, who gives him a lot of other stuff from various parts of the world to use, absorb, and generate. And I will repeat myself, to use, absorb, and generate back. So the storyteller, which is Piyush Mishra, taught a lot of these stories or shared a lot of these stories to the younger Ranbir Kapoor, with which he built a whole kingdom of variables around him, which is how a founder builds all the variables of his business, all the variables of what is going to move in, what is going to move out, what is going to be active, what is going to be rational, what is going to be accepted by the market, what is going to fall. It's all developed by bouncing it off to enough number of customers, enough number of reasons, enough number of rationales, and eventually getting a sense of what my customer needs. And at the end of it, if you remember, by the last scene that you see on the right hand part of your screen right now, when we kind of decided, okay, this is my track for life. This is how a business also via the node of customers, via the node of different kinds of storytellers, achieves a level of understanding who he truly is. And you need to bounce off multiple customer iterations to understand who your final iterative paying customer is going to be. Because that is the time that you can establish a balance between aspiration and a balance between what somebody needs to deliver. So that is what I want to say with Tamasha. You might have other reasons to watch this movie. Some of the best examples on how customer psyche development is done. I'm just giving you these examples. I might have got it wrong, and I'm okay to accept me going wrong, but I'm just wanting you to think parallel while thinking of new ideas, while thinking of newer models. You've watched Iron Man, you've watched Scam 1992, you've watched Tamasha. And the fourth screen that I want to share
is even more interesting. Has somebody watched this? Wolf Somnath of has Wall watched Street. everything on earth. Aditya has also watched this. Somebody remembers this particular scene. He's What is he he's selling? What selling do you pink. do derive from it? Not what, because that was not very ethical. And I'm not getting into the ethicality of it again, as I did with Scam 1992, the reference. The reason that I share this with you is there's a whole team this bit who's watching Jordan Belfort almost amaze the client on the phone. And how is he amazing the client on the phone? Because he's meaning sense to him. He's deriving requirement from him. Deriving data from him. And that's all that marketing is at the end of the day. Can you generate enough amount of information from your user? Again, that very people I talked about at the onset of the session today. Can you generate a reason for your own output, which is the brand that you want to build? How do you want to do it? Do you want to do it via some channels? ये तीनों जरियों के नजरिए you build an aspirational value in the minds of the customer and you eventually sell a strategy. And by the time you have successfully sold something, you have developed a successful marketing strategy. Developed it for the whole team. But the scene was good enough to make you feel that, okay, what he's selling is making so much sense. It's making so much continuity because he's selling something as absurd as the idea of pink slips is, or pink sheets is, and pink stocks is, or penny stocks, जिसको कहा जाता था पहले. But he's selling it with the conviction of growth. He's selling it with the conviction of the requiring person. He's selling it on the affordability and accessibility of the person, and selling it on the acceptability of the user. You never push a product down somebody's throat. You never put a particular service through to anybody and everybody. You always kind of take stock of what goes for them and what does not fly with them. If something goes with them, how does it go with them? How does it fly with them? Do you have the variables to align for that? And can you be patient enough to hear your own customer? Because sometimes we are very impatient. Sometimes as founders we are like, हमने इतनी कमाल की अच्छी चीज बनाई है, इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, क्यों लोग मेरे बारे में नहीं सुन रहे हैं, क्यों लोग मेरे बारे में नहीं जानना चाह रहे हैं, and so on and so forth. So that is where this particular scene and this particular movie plays a lot of good homage to the art of marketing. So again, suggestion: watch it for the good parts. There are a lot of bad parts in it. For the good parts, the boys will understand, so would the girls. Uh, but there's a lot to learn. There's a lot to take away from the movie. And then there's one last thing that every startup needs, and if that's not there, bus you will go burst, and your ideas, the upper ceiling for your executions to be very very tough. Can somebody name this movie? Not that great a hit, but great ensemble of characters and actors. Somebody knows this? Justice League. देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोशिश करना देख लेना, स्नाइडर कट देखना, ज्यादा अच्छी थी, ज्यादा अच्छे से बनाई हुई थी. But there are 6 different characters on the screen right now. So is a startup team. There are some core team members, which in this case was Wonder Woman and Batman. One with exceptionally good skills or exceptionally gifted, the other, the trier, the doer, the innovator, the hustler, which was Batman. And then they set out कि भैया हम तो डार्क सीड से नहीं लड़ लेंगे, या हम अपने नेमेसिस को खत्म या अपने प्रॉब्लम को खुद से खत्म नहीं कर सकते. We need to assemble a team across common environments and compensation. A lot of people say कि सब समझ में आता है, लेकिन स्टार्टअप में बेस्ट टीम क्यों आएगी? बिकॉज बेस्ट टीम को तो बेस्ट पैसे चाहिए होंगे, और बेस्ट पैसे तो देने के होते नहीं हमारे पास. सबको बेस्ट पैसे नहीं चाहिए, सबको एक बेस्ट मोटिव भी चाहिए, एक बेस्ट रीजन टू एग्जीक्यूट. एंड वो बेस्ट रीजन मोटिव वाला एक्सप्लेनेशन आप कितना अच्छा कर पा रहे हो एज अ फाउंडर. What is the kind of basis that you have for your idea? What is the kind of concept validation, prototype building, customer development, transition of prototype to startup,
marketing thought that you have in your head, कि कितना आपके पास तैयार है, will get to decide what is team which brings you the future proofness like Cyborg, or to a team which gives you swiftness, scale, speed like Splash, and the ultimate power or the ultimate differentiator or the ultimate value proposition like Superman. So the idea that Justice League represents your whole business model canvas to believe you will be able to achieve your objectives, your problems to people issues that you have identified when you assemble the right kind of team, when you assemble the right kind of combinations, when you assemble the right kind of to's and fro's between the character. I just wanted to let you know that there is a parallel which points towards entrepreneurship. There is a parallel universe which talks about very your general finance experts and investments experts and startup building experts and venture builders and incubators and accelerators. You build businesses when you understand people behind the issue that you're solving. You build businesses when you understand what is the brand emotion that you want to reciprocate with. You build businesses when you are very excited about the technology that you're wanting to use to bring out a change, the kind of intervention that you want to have via the assets that you're introducing to market, via the channels that you want to talk about, via the teams that you assemble, via the customer development that you do, via the unique conversations and confidence that you exude, and most importantly, the unique way in which you develop your own last mile customer. That is the sole and whole way that investors, incubators, accelerators, the world is looking out for you. If you have something unique about you while building tech or while building assets or while building channels, all the while focusing about people, focusing about a good profit formula, which includes impact livelihoods also. And when you know about your distribution, if you know these 6 parameters, you're sorted. And sometimes you just need to master one. A lot of people say entrepreneurs are a jack of all, a lot of trades or a jack of many trades. They are generally jack of some trades, but for sure master of one. And that is what you would essentially require to excel with incubators, to excel with your idea, to take it to the next stage of execution, to kind of launch various variations of it, like Iron Man launched his prototypes, or like Jordan Belfort sold his various kinds of stocks, or eventually the number of nemesis that a particular Justice League kind of hit through. So the idea was not to take you towards a yellow page logic of cinema, but to give you a sense that anecdotes, similarities, analogies exist across industries. It's just about you to open your eyes and absorb these